फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Revenge game for India versus England, the second semi-final. Sahil, इंग्लैंड मुझे पर्सनली उतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही है इस पर्टिकुलर एडिशन में। हाँ, एक दो मैचेस उन्होंने लास्ट में अच्छे खेले हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, द काइंड ऑफ फॉर्म दैट इंडिया आर पोजेसिंग, एंड विद द फॉर्म आई मीन द bowling form specifically and Rohit's form as well. See, first of all, Twitter was all crazy last night, right? They considered yesterday's result as a revenge for what happened on November 19th. I think it wasn't a fair comparison. Yeah. वो रोहित सेड ना साउथ अफ्रीका के अंदर की थोड़ा बाम लग जाएगा अगर साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतेंगे, तो आई डोंट थिंक कल वाले रिजल्ट से नवंबर 19 का कोई वो बाम या ऑइंटमेंट लगेगा. If we want to talk about the revenge game, I think it's going to be India versus England because we were thoroughly humiliated in that semi-final in the 2022 edition. We were completely outplayed. Yeah. They showed that we are playing that outdated brand of cricket and we did not learn. We picked the same set of people again, but those same set of people with some fresh injections of Jasprit Bumrah and Rishabh Pant and Virat Kohli trying to show intent, Rohit Sharma trying to show, and finally the intent paying off yesterday. It has been a so far so good campaign. Now they run into England. England, we all know the kind of cricket they'll be playing, but India look better prepared this time around. We don't have a Bhuvneshwar Kumar जो swing और movement हिलते ही 60% of the bowler degrade हो जाएगा death overs के अंदर या सिर्फ वो wide line पकड़ेगा. We have Jasprit Bumrah. Arshdeep Singh has been phenomenal. I think मैं खुद शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को 2 गाली दूंगा because we kind of criticize Arshdeep left, right and center during the IPL. यार, we kind of questioned his temperament, his skills in the death overs, but he has looked a completely different product in this World Cup. Maybe bowling alongside Jasprit Bumrah, where Bumrah has been applying pressure and bottling up one end, has helped him and allowed him to free himself up. But whatever it has been, he has been completely on song. And then there's Kuldeep Yadav, who has become your leading spinner across formats now. I know I'm making a big statement, but I find him India's leading spinner across formats, not dependent on conditions. हवा में जादू हो जाता है. सिर्फ 2 चीजें ठीक करनी है, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा. ये क्लिक हो गए तो आप टाइटल जीत सकते हो. और जो पिछली बार उन्होंने कहा था जेमी भाई को, बारबेडोस में झंडा तभी लहराया जाएगा अगर विराट कोहली रन करेगा और रविंद्र जडेजा कुछ करेगा, क्योंकि अभी तक पता नहीं जडेजा का रोल क्या है 11 में. बस वो है. ये कुलदीप वाला स्टेटमेंट किसी और ने भी दिया था. So let's not go there. But Jamie, that was a different statement. That statement was he's our best overseas spinner and he never played an overseas test after that. That was different. वो अलग था. And there's a backgrounder to that story. Why that statement came? That statement was to rub someone else. So a lot of things. Yeah. As I said, let's not go there. देखो भाई, क्रंच टाइम में आपके टॉप 2 में से किसी एक का चप्पू चलना जरूरी है. कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा चल गया तो ट्रेविस हेड न्यूट्रलाइज हो गया. आपके टॉप 2 बॉलर्स में से किसी एक का चलना जरूरी है. बुमराह ने अगर ट्रेविस हेड का वो विकेट नहीं लिया होता तो फिर मैच का रिजल्ट कुछ और होता. I'll quickly take a comment from Jamie on this. हेड फिर से रोल हो जाता भारत के ऊपर. टीम रोल हो जाता तो वो नहीं. National headache बन जाता. National headache. Jamie, do you agree to what Sahil said that India are much more prepared than England this time around? थोड़ा सा बेटर लग रहा है क्योंकि इंग्लैंड के मैचेस खराब ही हैं, बट दे आर बैक इन दैट काइंड ऑफ अ टच जिसमें वो आते हैं, in the knockout stages. Do you think India are better prepared? I don't know about better prepared because, I mean, until yesterday, Rohit Sharma hadn't done a damn thing. So now he sort of got himself into that safe zone, but Virat Kohli is averaging 10, which is abysmal. And Pant has been decent, Sky has been decent, Dubey disaster, Pandya. So there's a lot of problems. तो सबसे बड़ी बात ये कि 22 में बुमराह नहीं था, right? बुमराह इंजर्ड था पूरा 1 साल के लिए. अगर बुमराह होता उस दिन हारते, क्योंकि रन तो बिल्कुल नहीं बने, लेकिन 10 विकेट से नहीं हारते, शायद 7 विकेट से हारते. So from that aspect, England have a massive challenge. They're facing the best. I mean, Zahir just mentioned Kuldeep. I'm saying that this guy on our screen is the best new ball bowler across formats in India's history. He's not had a bad game. I remember New York में इनका आखिरी मैच किसके साथ था? USA. I think he went wicket, right? मैं वहां पे था, फैंस कह रहे अरे यार बुमराह का एक खराब मैच था. I want to abuse them and say, boss, he just got 2 man of the awards.
this is arguably, at least इस नाचीज के राय में, India's best new ball bowler across formats. His 4 overs are going to be crucial. Kuldeep, I agree with what Sahil said. इनके 8 ओवर बहुत मुश्किल है. बस मैं ये कह रहा हूँ, I think England are the favorites, and I'll tell you why. कल का मैच देखो, ट्रेविस हेड, मैक्सवेल, ये दोनों आपको मौका देते हैं. बटलर, बेयरस्टो, वो आपको मौका नहीं देते, राइट? ट्रेविस हेड कैन डू व्हाट ही वांट्स टू, बट वो लगता है इसी बॉल पे आउट होगा. इफ जॉस बटलर एंड मोर देन फिल सॉल्ट, मोर देन ब्रुक, अगर बटलर और बेयरस्टो टिक गए ना, ये आपको मौके नहीं देंगे, ये आपको कूट के मारेंगे. That's why if Bumrah can get these two, I'm going to stick my neck out and say game in the bag. Get Brook, get Moeen, ये सब चलते हैं. Butler is looking deadly. Butler has had a terrible one-day work. He felt the pain. His team was supposed to defend the title. जो उनकी ज्यादती हुई ना पिछले साल, ये इसका बदला लेंगे. So I don't like to use the word बदला. I just think it's India's toughest match was actually not Australia. अब ये मैच है. If it was India, South Africa, I would say अरे ठोक देंगे उनको. In India, England, it's going to be a very, very tough match to beat.